the director, the actor, also in his capacity of a producer. Yes. Hi, everyone. Still sinking in. For me too. Look at the scale, the texture, the brilliance of it. I'll come to all of that, the technicality, the performance, the emotion behind it. But first, the stock question. Why Veer Savarkar? Why not Veer Savarkar? In the 80s, there was a movie made on Gandhiji. Subsequently, there have been movies made on Sardar Patel, two of them. And I myself have done Rang Rasya. I played on Raja Ravi Verma. I did Charles Sobraj, Sarabjit. So why not Savarkar? I think that's the big question. I think movies are a great medium of reaching out to people, even internationally. America has done that very well, even recently with Oppenheimer. They have, but in our country, we are shooting down our own icons, which is unbelievable. So my question to everybody is, why not a movie on Savarkar? Brilliantly put. Not just your transformation in terms of physicality, but the emotional landscape of it. You have lived the character. And here is a story that tells us who the man was. Can you please tell us who the man was not? What he was brave. And what he wasn't was a coward. What is the first word comes to anybody's mind when you talk about Savarkar in today's dispensation? First word. Maafi Veer. He was not a Maafi Veer. There were petitions, bail pleas they were called, and everybody had a right to apply to the court. And if anybody has been to court, they would know how they address the court. And the language is very respectful, though you might not mean it. And there were many, many people who wrote that. If you're sentenced to 50 years of life in Kalapani in a 7x11 cell, you would not just rest there and think of it as a resort for the next 50 years of your life. You will use everything, Sam, Dam, Danda, Bhed, to get out of there. He felt that he had to contribute a lot to India's freedom struggle, culturally, socially, and he wanted to get out. दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते. Crisp and sharp, blunt and sharp at the same time. Please tell me why the man, the Veer that he was, his philosophy, his ideology, why he continues to be relevant even in today's day and time. Well, he's very relevant today because he looked at India as a civilization. He looked at India as a cultural unit, as Akhand Bharat, as he used to say. And India's position in the world today has grown not only because of diplomacy, but because we are armed to the teeth. It's only being armed that there can be peace. Otherwise, people will keep bullying you. And I think the India as a country today is armed and it's respected in the world, and there is peace because we are armed. And that was Mr. Savarkar's philosophy, and his philosophy on Hindutva was all encompassing कि देश धर्म से ऊपर होता है और सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी यहाँ रहते हैं वो इसको जो भी इसको अपने पूर्वजों की ज़मीन मतलब अपने पितृभू पूर्वजों की ज़मीन मातृभूमि यहाँ की संस्कृति त्योहार खान पान को अपना मानते हैं वो हिंदू हैं चाहे वो किसी भी धर्म जात या समाज के क्यों ना हो. So I think his idea of uniting India as a society, as a country, was the most unifying.
And I think that's what we are following today. We are trying to unify the country where we put country before religion. This man has internalized the character to another level, to another degree. And with that, I call on the stage the producers of the film. Anand Pandit sir, please join us. Sandeep Singh sir, please come along. Also, Yogesh sir, please join us. Yogesh Ahar. तीनों से पूछना चाहूंगा, ये जो स्केल है, ये जो माउंटिंग है, इसका जो टेक्सचर है, हर एक फ्रेम में एक रिचनेस है सिनेमैटिकली स्पीकिंग. तो एक स्तर जो होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज आवर अनसंग हीरोज ये डिजर्व करते हैं ऐसा स्केल, ऐसा टेक्सचर, ऐसा स्टोरी टेलिंग. एज अ प्रोड्यूसर आपका क्या कहना है? I think Savarkar needs that, and today's film also needs that. You have to have that experience of that era, and I think Randeep has done brilliant job. आपके सवाल का जवाब मैं देने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो रणदीप, थैंक यू सो मच. Thank you. नहीं, थैंक यू फॉर डायरेक्टिंग दिस फिल्म. एंड आई रिमेंबर आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माई मैसेज एंड आई जस्ट सॉ कि 15th August 2021 was the first time I messaged Randeep Hooda and Panchali कि we would like to have Randeep Hooda as Savarkar. And I remember Panchali said, yes, of course. Do you have the script? बोला नहीं है. And I came to Randeep and I said, script almost ready हो गया है. And he said, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा है. जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग. और फिर धीरे धीरे रणदीप पूछता गया, स्क्रिप्ट कब आएगा, स्क्रिप्ट कब आएगा, स्क्रिप्ट कब आएगा. और एक दिन मैंने बोला, यार रणदीप, because he started from 16th August, he started sending all the informations about Savarkar ji to us. And then we decided, why don't you write this film? So he said, yes, I can, but I need some people, and that's how Utkarsh came on board. But firstly, I want to thank on this film. When I gave the concept of making this film, everybody told me not to make this film because it will never be made. और फिर बट ऑब्वियस एक इंसान जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे वो है आनंद साहब, आनंद पंडित जी, जिनके पास मैं गया और मैं बोला, सर एक फ़िल्म बना रहा हूँ सावरकर और मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म पे सपोर्ट कर दें. तो ये बोले, ठीक है, कौन कर रहा है? उस समय तक रणदीप ने मुझे हाँ नहीं बोला था. तो बोला, सर रणदीप हुडा कर रहा है. और आनंद सर, थैंक यू सो मच. एंड सेकेंडली, दिस काइंड ऑफ फिल्म नन ऑफ द स्टूडियो कम्स फॉरवर्ड एंड टेक्स इट. तो जी, थैंक यू सो मच for really taking this kind of subject from us, because this is what gives us the strength to make better cinema for Bharat. So उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शारिक का, and especially नीरज, and who's I think has one of the best. इतनी फिल्में करने के बाद मुझे लगता है ये फिल्म का मार्केटिंग और PR प्लान, नीरज, I think you and your team has done a brilliant job. Just looking at the plan, I can say कि marketing is going to be super hit, and so that will help also our film. But thank you, Randeep, once again. I think you have gone through a lot. Thank you, Sandeep. Thank you, Yogesh. योगेश सर, आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब आपकी जो जर्नी रही है, मिडवे आपने यहाँ पर शामिल हुए, ये थोड़ा सा अजीब है सुनने में, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, अंदाज क्या है, स्टोरी क्या है, आपसे जानना चाहेंगे. पहले जो प्रोजेक्ट के बारे में रणदीप भाई से डिस्कस हुआ, तो मेरा जो फर्स्ट इंटेंशन था, आई बिलोंग टू ए फ्रीडम फाइटर फैमिली. माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज ए फ्रीडम फाइटर. और ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था कि मेरा मूवी में एज ए डेब्यू प्रोड्यूसर और इस फ्रीडम फाइटर की कहानी के साथ मैं जुड़ रहा हूँ. तो ये एक मेरा ड्रीम डेब्यू है एज ए प्रोड्यूसर. और ये जो स्वतंत्रता सेनानी की कहानी है वो इंस्पिरेशन बनेगी आगे आने वाले यूथ के लिए. हर किसी के पास वो कहानी जानी चाहिए. पहले काफ़ी कहानियाँ गई हैं, भगत सिंह की गई है, चंद्रशेखर आज़ाद की गई है, तो सावरकर जी की कहानी हमारे पेंडिंग थी, जो आज जिस ट्रेलर पे हम बैठे हुए हैं वो कहानी आज प्रेजेंट हो रही है. तो इसमें संदीप जी, आनंद जी, रणदीप भाई, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका थैंक यू वेरी मच. और
सेकंड मैं रणदीप भाई का थैंक यू करना चाह रहा हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, वो एक कनेक्ट क्रिएट हो गया था। और पिछले 1.5 ईयर से मैं इसमें प्रोजेक्ट में साथ हूँ। तो मैंने जो इनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन क्राफ्ट के लिए देखा है, मतलब वो अनबिलीवेबल है। तो उसको कोई मैच नहीं कर सकता। और मेरे को लगता है कि इससे बेटर किरदार, रणदीप हुड्डा से बेटर किरदार, सावरकर का किरदार कोई प्ले नहीं कर सकता। Thank you. थैंक यू रणदीप भाई, Thank you. थैंक यू संदीप जी। Agree. Thank you, आनंद जी। Completely agree with you. जब हम फ्रेम देखते हैं, जब इनकी आंखें देखते हैं, and I was having this conversation with him, it's like absolute vairagya in his eyes, absolute detachment, and at the same time, this tremendous patriotism for the country, beautifully reflected. What is your take on this, Anand sir? I mean, you could not have found a better actor. He did a complete justice to this fiery role. The role completely deserved him. I would say he's beyond even method actor. तो वो since Savarkar is the film right now, वो सावरकर जी को जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो हमारे साथ में झगड़ा करता है तो भी सावरकर के जैसा ही एग्रेशन उसके साथ में होता है। It's too good, too good. संदीप सर, आपने कहा कि बोल्ड मूव है, फिल्म भी इतनी बोल्ड इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन प्रोड्यूसर्स को भी उतना ही बोल्ड होना पड़ता है ऐसे किरदारों को बड़े पर्दे पर लाने के लिए। कैन यू गिव मोर सबटेक्स्ट टू दैट स्टोरी? नहीं, मुझे जितने लोगों ने मना किया इस फिल्म के लिए, उतना मुझे हाँ अंदर ही अंदर मेरे आत्मा से निकलती गई कि मैं ये फिल्म, और मैं एक्चुअली 2018 से कोशिश कर रहा था, बट मुझे ये पता था कि कोई भी स्टूडियो या कोई भी फंडर या कोई भी इंसान इस फिल्म को सपोर्ट नहीं करेगा, और एक्टर्स बहुत मुश्किल हैं। और क्योंकि सरबजीत में रणदीप के साथ मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एंड दैट इज़, आई विल से कि मेरे 15 फिल्मों में से सरबजीत इज़ माई बेस्ट फिल्म। एंड तो मैं, मतलब मेरी बस एक ही चीज़ थी कि अगर रणदीप ना बोल देता इस फिल्म को तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती, ये श्योर था। क्योंकि और बाकी के एक्टर्स अपना मार्केटिंग परसेप्शन और अपनी इमेज जो है कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे, वो सब ढूंढने लगते हैं, और फिल्म और कैरेक्टर्स नहीं। तो रणदीप अगर मना करता तो ये फिल्म बनती नहीं शायद। One last question before I throw the floor open to the media, for the media. As a writer, as a director, of course, as an actor, as a performer, and now this special feather in your hat, that of a producer. इतने सारे roles निभाते हुए ये कैसे हुआ? My least favorite was being the producer. um, um, I think somewhere I read many books about him in Hindi, English, and even got my Marathi friends to, kind of give me proper translations of their films. I had a great co-writer in Utkarsh, and when we wrote Utkarsh Nethani, and when we wrote it kind of visually in our discussions over many nights of fighting, and then once that idea started forming in my head, I was very fortunate to have a great team. The movie is looking great because of Arvind Krishna, who was my cinematographer, and Nilesh Wagh, who's my production designer, Sachin Lovelekar, who did the costumes, and even my CG VFX team at White Apple. They've been great, and sound of Ganesh. So I had every time I came across something, like my first day as a director, or first day as a writer, first day on the edit, or anything, I used to always say, okay, I've never done this before. Please tell me, how is it to be done? So once I learned that very quickly, then I'll be telling them how to do it very soon. And the background. And the background, yeah. And background done by Matthias Duplessis and Sandesh Chandalia. I wanted a very modern sound to the movie. I always wanted this movie to go across to young people who maximum number of percentage of young in India, the young people, and I wanted the real Savarkar ji to come across to them. And that's why I tried to make a movie which was modern, young, relatable, and all-encompassing story on his life. It was a very difficult 2 years for me. I often say that I was in Kalapani for 2 years, but I'm really happy that Swatantrya Veer Savarkar is finally releasing from the jails of perception,
and the real story will get across to people. It's always a nice sight to see the actor, the director, and the producers sitting right alongside with a big broad smile on their faces. Thank you so much. With that, I throw the floor open for the media people to ask their queries and questions. Please go ahead. Microphone, please. Right over there. हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है एंड आप सबको बधाई रणदीप जी से पहला सवाल है जैसा कि शायद हमने ट्रेलर में देखा कुछ ऐसी बात की गई थी कि यदि सावरकर जी होते और आर्म्स स्ट्रगल के थ्रू क्या हमें हमारी आज़ादी पहले मिल सकती थी, क्या ये संभव था? ये बिल्कुल संभव था क्योंकि 1900s के पहले दशक में एक मूवमेंट शुरू हो चुका था. एक तो सीक्रेट सोसाइटीज़ बन चुकी थी. सावरकर जी वीर सावरकर वॉज एट द हेल्म ऑफ इट. लोकमान्य तिलक जी का उन पे हाथ था और वो प्लान कर रहे थे. उन्होंने गन्स इंडिया स्मगल की थी, बॉम्ब मैनुअल्स इंडिया स्मगल किए थे और सबको चिट्ठी लिखी थी कि वो बगावत के लिए तैयार हो जाएं, प्रिंसली स्टेट्स को, फौजियों को. तो 1912 तक उन्होंने ये प्लान किया था कि हम इनको इतने कम तादाद में अंग्रेज़ हैं हमारे देश में कि अगर हमने इनको मारना शुरू किया तो इनको समझ में नहीं आएगा और ये डर के भाग जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली Lokmanya Tilak died, Veer Savarkar was sent to prison, and that momentum of that movement was lost. And then, of course, the non-violent movement started, which was more conducive to the British because it was not direct confrontation and it was negotiations that went on for many, many, many years. And ultimately they left because they lost too much money in the First World War. And they had to leave. But that's the story. We could have got our freedom earlier. मेरा जो दूसरा सवाल है, आई वुड से इट इज़ मोर इन लाइन विद द करंट मॉडर्न सेंसिबिलिटीज़. और जब हम आज विश्व में देखते हैं दो रीजन्स में युद्ध हो रहा है, और जब मैं इसराइल और पैलेस्टीन की बात करूं, एक देयर इज़ अ थियोरी ऑफ इक्विलिब्रियम यूज्ड इन डिफेंस सर्कल्स इन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जहां पे आपने भी जिक्र किया दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी आर्म्ड. लेकिन ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इतने सदियों से चल के आ रही है. और हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमास के लिए उन्होंने कहा कि आप अहिंसा छोड़ के, वायलेंस छोड़ के आप इंडिया की तरह फॉलो करें, गांधीवाद बनिए. तो इस चीज़ पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरी पिक्चर से रिलेटेड सवाल नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब आप सशस्त्र होंगे तभी आप पीस टेबल पे बैठ सकते हैं, नहीं तो आपको बुली ही किया जाएगा. और जब दोनों साइड इक्वली आर्म्ड होती हैं तब जाके पीस होती है, ना कि एक साइड अहिंसा को फॉलो करे या दूसरी साइड हिंसा को. उससे कभी पीस नहीं होगी, उससे ऑक्यूपेशन होगी. जय हिंद सर, थैंक यू फॉर द ट्रेलर इवेंट. सर मेरा दो प्रश्न है. पहला प्रश्न ये है कि जो आपने जो सावरकर का जो कैरेक्टर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप बताना चाहेंगे सर? बहुत लंबा सवाल है दोस्त, इसको बहुत लंबा आंसर है. एक्चुअली सवाल तो आपका छोटा ही था, पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि हर एक इंसान अपने सर्कमस्टांसेस का एक नतीजा होता है, वो कैसे होते हैं. So what I tried to do as an actor was explore the circumstances that made Veer Savarkar who he was, his ideology, his thought process. And what I felt was that he was a man of a giant intellect, a man of resilience, a man of great smartness. And he believed in साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके हमें इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है. और मेरे हिसाब से उनकी कहानी लोगों तक जो नहीं पहुँच पाई वो एक ट्रेजेडी है. और मेरे ख्याल से उनको भी ये बहुत अपने जीवन में भी बहुत लगा कि उनको अपना ड्यू नहीं मिला. Hi, this is Sohail. On the right,
रणदीप यहाँ पर या हाँ बोलो बोलो. कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम. आप जब भी कोई रोल करते हो एकदम ही लाइक यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर यू कैन से एंड परफेक्शनिस्ट. आप बायोग्राफी मैन जैसे कहलाते हो इंडस्ट्री के. हाउ डज इट रियली फील बिकॉज यू डन सो मेनी रोल्स जहाँ पर आपने बायोग्राफी की है. आप चार्ल्स सोबराज बने हो तो उनकी तरह ही लगते हो. सरबजीत का रोल था तो वहाँ पर आपने स्टारवेशन तक कर दी थी लेकिन उस कैरेक्टर के लिए उस ढलने में. तो is it a very conscious effort also from your side to do these kind of, because ये characters are very powerful and how much do you enjoy also? मेरे ख्याल से ये प्रोड्यूसर्स की गलती है कि मेरे पास घूम फिर के यही प्रोजेक्ट आते हैं. If I can interrupt, he's one of the finest method actor. When you say method actor, आदमी वो character में चला जाता है. जी. So you will, till the time of release, you will see him as Savarkar only. So that is the beauty of his body language. So I think मैंने answer किया आपका जवाब, but पर रणदीप आपसे थोड़ा जानना था, how much do you enjoy those process also, I- because it's a hard tough thing actually. It is hard in some aspects and it's easier in some aspects. It's harder because people have a reference, a look reference, sometimes voice reference, a lot of pictorial references. So you've got to get that right. But more than that is to get the thought process right, why the man thought and said what he said and what he did, why did he do it. And in terms of fictional characters, it's easier in that sense, but it's more difficult because you don't have a reference. But in both cases, I really do enjoy doing biopics. Nonetheless, it gives me an out-of-body experience if anybody gets that. Yeah, and one more, like महात्मा गांधी जी की assassination को लेकर भी evidences है, तो how has that thing been shown and कितना उसका ख्याल रखा गया है कि देखिए इस पिक्चर में से मैंने उनके ऊपर उनके जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो पब्लिक लाइफ में उनके ऊपर सवाल उठते हैं मैंने उन सब को एड्रेस किया है. बापू's assassination is also a part of the movie, but that is not what we dwell into. सावरकर जी को उससे बाइज्जत बरी कर दिया गया था, इसलिए नहीं कि सबूत नहीं था, इसलिए कि उनका उससे कोई कनेक्शन बना ही नहीं पाए. और फिर उनके ऊपर कपूर कमीशन भी बैठी थी, उन्होंने भी डाउट दिखाया. एंड इन 2018 the Supreme Court of India upheld the decision that was taken in 1948-49 after Gandhiji's assassination, that he was innocent. Good morning. Hi Randeep Hooda. Hi, this is Ravi from ABP News. Hi. दो छोटे छोटे सवाल हैं. एक तो सावरकर जी की जो हिस्ट्री रही है उस पर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, काफ़ी चीज़ें कही गई हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि वो एक एपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर जेल से छूट के वो बाहर आए थे. ऐसी तमाम चीज़ें कही जाती हैं. क्या उस चीज़ को भी आप लोगों ने फिल्म में एड्रेस किया है? बिल्कुल बिल्कुल एड्रेस किया है, और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि वो माफ़ी वीर नहीं थे. उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, उन्होंने कोर्ट में याचिका रखी थी, जो कि हर एक कैदी का, हर एक लीगल सिस्टम का एक हक होता है एक डेमोक्रेसी में, और कॉलोनियल पीरियड में भी था. और उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ये लिखी थी. और जैसा मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन को किए हुए वादे निभाने वाले नहीं होते, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद यूज़ करके वो सब कुछ किया था, और वो पूरा सब कुछ पिक्चर में है. I have addressed it very extensively in the movie. रणदीप, एक छोटा सा और सवाल. इस पे एक सेकंड में बोलना चाहूँगा. हाँ. हम सब ने कोशिश की है इस फिल्म में कि वो माफ़ी वीर नहीं हैं, न थे, और ये एक पार्टी की प्रतिक्रिया होगी पर हमारी नहीं है, और जनता की भी एक परसेप्शन है उनके बारे में ये. तो मैं चाहूँगा मीडिया उस चीज़ में हमें सपोर्ट करे कि स्वतंत्र वीर सावरकर वो वीर थे, माफ़ी नहीं मांगने वाले इंसान थे वो. रणदीप, एक सवाल और था कि फ्रॉम बीइंग एन एक्टर टू अ डायरेक्टर, इस प्रोसेस को आपने कितनी इजीली एक्सेप्ट किया और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? क्योंकि एक्टर को सिर्फ जो डायरेक्टर बताता है वो आके करना होता है. और मैं ऐसा एक्टर कभी नहीं था जो डायरेक्टर बोले और मैं वो कर दूं. मैं हमेशा से डायरेक्टर के साथ एंगेजमेंट में रहता हूं, और यूजुअली मुझे स्क्रिप्ट बाकी डायरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छी तरह से पता होती है, क्योंकि मैं उसे बहुत बारी पढ़ता हूं. तो ऐसा कभी नहीं था कि मैं एक कठपुतली ही था. और फ्रॉम एन एक्टर टू अ डायरेक्टर, इसका बहुत ही
एक सिंपल मैंने एनालॉजी बनाया था कि आई वॉज एन इंडिविजुअल टेनिस प्लेयर, जो कि अपने एकांत में अपना तैयारी करके टेनिस खेलता था। फिर एकदम से मुझे फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया, और फुटबॉल टीम का कैप्टन बनने के बाद मेरा काम था सबको इंडिविजुअल टेनिस खिलाना। तो वो बहुत एक मुश्किल था, पर जैसा मैंने ये ठान ली थी कि मैं इसको इस प्रोजेक्ट को, इस मूवी को इसके अंजाम तक लेके आऊँगा, और वो मैं ले आया हूँ। उसके लिए मैं क्या क्या गुजरा हूँ, वो स्ट्रगल सावरकर जी की स्ट्रगल के सामने बहुत छोटी है दोस्त। Good morning. Hi, Randeep. Good morning, Okay. Randeep. Hi, my name is Monty. I'm from New York. Am I audible to you guys? Yeah, of course. Excellent. You give a very beautiful reference point of Oppenheimer. First of all, congratulations to all you four wonderful gentlemen on the podium. This is a huge project, because this project might go down in history. As Sandeep rightly said, he had a lot of rebuttals since 2018, and people are not ready to listen to this wonderful story, which is non-fiction, factual, a biopic. So kudos to you. A great round of applause, ladies and gentlemen, for this wonderful, wonderful four guys Thank on you so stage much. who've gone against the storm, gone against the tide, with support. Now, Randeep, coming back to the reference point, Oppenheimer also had a lot of obstacles when being made in the United States. Most importantly, the duration. A lot of people don't know that this film is 2 hours and 56 minutes. When you sit down and when you wrote the script of this film, how everybody wants the film to be a commercial success or a critical success. In your case, you want it to be both. What have you done on the script-wise that you've kept the audience engagement to make sure that the audience stays and watches the entire film for 2 hours and 56 minutes? Well, it was all in the screenplay. We wrote the screenplay, me and Utkarsh Nethani, we wrote the screenplay in a way so that it keeps people engaged from one step to the other, and people discover things as they go on. And also, from the commercial angle of it, I made sure that it was a very user-friendly film. It was not a preaching on Veer Savarkar's life. Rather, it was a discovery of his life as we go along, as he discovers it. In the case of Oppenheimer, they have one case that's going on with him, and they keep cutting back to his life. I have gone the hard way. I've told a linear story from 1897 to 1950, keeping in mind the reality, the dates and everything, but making it, writing it and making it in a way which is dramatic, engaging, and enthralling. It's at times this moves like a thriller. Hi, Randeep. Jaya here from Bollywood now. This side, stay. Aye. अभी आपने बोला कि बॉक्स ऑफिस प्रोड्यूसर का रोल आपके लिए लीस्ट फेवरेट रहा है. आई वुड लाइक टू नो कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स आपके लिए अफेक्ट करता है या इट वरीज यू. Everybody is bothered about box office numbers, man. Of course, box office numbers for me are a clear indication that my work has reached out to that many people. Oftentimes, the work that one does reaches out to people through OTT and satellite, but box office number gives you a guarantee that that many people saw it collectively in a hall, how movies are supposed to be seen. So it is very important. Every artist wants their work to reach out to as many people as possible. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Yeah. नहीं पहले भारती जी. माइक लीजिए आप. आपकी आवाज गूंजनी चाहिए. Talk to me about the transformation, physical transformation for the character, because it was very tough. I know the whole story, but can you Yeah. You know everything, Bharti ji. आपसे कुछ नहीं छुपा है. तो physical see, I do that in every role. It is more pronounced in movies like Sarabjit and Do Lafzon Ki Kahani, because that's an extreme physical transformation. But even in a series like Inspector Vinash or Cat, for that example, I did go. But transformation for me is more of a thought process, and how does that particular character sees the world. And physical transformation is probably the most basic part of it. I believe that you got to look the character for making people believe it. It is tough. It is tough. My mother often
leaves leaves the home and goes back to Haryana. I can't watch you, not eat anything. In this case, I lost about 32 kilos. So it was more than Sarabjit. But I felt that if a person is locked up in Kalapani for so long with meager food and very bad conditions, there was an extreme weight loss. And Savarkar ji had jaundice many, many times while he was there, and he was skeletal. And in fact, in the end, they finally let him out through Mr. Gandhi's intervention. My health condition has suffered a lot, but I've got my sister, Anjali Hooda, who's been very, very careful with my transformations, and she has warned me now not to do it again, but I probably will. Randeep. Hello. Hi. Hello. Hi, Randeep. Here pe, everyone. Yes. Hi, this is Simran Singh here. First of all, congratulations, Paji. For the Hi, Prava, ki haal hai? बस बढ़िया, तुसी ठीक हो? ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. Okay, so my question to you is कि see, आज के दौर में since we have the best of VFX, we can do anything. मतलब हम आज बली नकली मूछे लगा के 30 दिन के अंदर शूट करके हम कर लेते हैं. But हाँ, but there are projects of yours when you have gone a severe physical transformation. मतलब भी Sarabjit, Battle of Saragari भी थी. That was also you dedicated years to that project, and now Savarkar. How do you look upon to the fact, when a film has been approached, मतलब आपको film आती है, आप उसको as an art आप उसको पूरा फॉलो करते हैं and you give years to that. You're not into that कि हाँ चलो VFX हम कर लेते हैं, क्या पता चल जाएगा. What are your thought process? Because कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है that you don't want to cheat your audience, your fans. I think I don't want to cheat myself, mostly. Because getting those, I say no to every project when it comes to me, verbatim, like I don't want to do it. Because I can already see how many months and years it's going to go into it. So I'm very reluctant. But once I've chosen it, then it is for me to experience as a human being, putting myself in another human being's shoes. And that cannot happen overnight. I do end up making less money than others, but I hope my work lasts longer. And I could be an example of some kind for people to come. And to love your work is to really love God, I think. I think that's what it is. That's what I do, and I'm proud of it, though my parents are always worried about it. But I hope they'll see the bigger picture. Hello. Yes, sir. Hi, Randeep Randeep, here. sir. Randeep here. Hi. Oh, yeah. On your left. Bro. First of all, hats off to the trailer and yourself. Thank you. The question is a little tricky for you. Like, I just why are you want to asking know, it, yeah? Yeah, I'm because I want to know, because should I call you a greedy person for this movie? Because it has to be the zing in you, because to select such a role, because you are the producer, you're the director, you're the actor. So why did you choose because there was something in you for Savarkar, or just came or you did it? I think all these things came by steps, not at one time. And I think it might be Veer Savarkar's wish that I become all-encompassing entity on this thing. But it is wrong to believe that I did it all alone. There were my producing partners. There was a beautiful crew that worked very hard, and wonderful actors who put in a lot. And because I used to be starving, so I used to be very chidchida, as they say, right? So there's a word for it that has been invented called hangry. So I think they bore a lot of that brunt. But yeah, I think somewhere I do believe that I was chosen for it. And all I kept doing at every stage, at every new stage, was that I have to give it my best, because I owe it to Veer Savarkar, to his spirit, to his legacy, and to his untold story, that I tell it well so that it reaches people and people absorb it and feel what he went through and all the sacrifices that he made, which have been brushed under the carpet. Hi Randeep sir. This question is for Samir here Sandeep. from Movie Talkies. Sir, trailer के आखिर में एक scene है when you speak about Congress leaders not getting the Kala Pani penalty. So will we see this Savarkar versus Congress debates more in the film, and it might spark some controversy? It is about the armed revolution. The movie is about the armed revolution,
And Congress, most of the time, except for Lokmanya Tilak, was a pacifist organization, and that is true. No Congress person was ever sentenced to Kalapani. Why would that be? I think it's a question that I'm asking the audience, and I think it's a question for you as well. You should do some reading up and see what it is. It is not Savarkar ji versus anybody else. It is his story, and of course, the larger story is the story of the armed revolution, in which he was a very big influencer. He was an ideologue. He converted the 1857 mutiny, which even I was taught in school as 1857 Sepoy Mutiny, into the first war of Indian independence. And that turn of point of view gave a lot of inspiration to all the freedom fighters that came after him, and mostly that took up arms to destroy the British out of India rather than begging them to leave. My question is for Sandeep. Sandeep, first of all, congratulations on your previous accolades, Atal, and the great story on our Honorable Prime Minister. Very few people know that you are a fighter. Could you tell us about the difficulties of bringing this movie to the foray as you've done it? You said you started off in 2018. What were the challenges that you faced, and what is something that you would like to share with us? You said that people said, "Ye film mat bana, kyun nahi bana?" What were the rebuttals that you were getting back from wherever you're going for help, and how did Anand sir came into the picture, and what inspired you from the life of Vinayak Damodar Savarkar sir that you can relate to yourself? आप क्या उनमें ऐसा देखा उन्होंने जो this is your baby actually? So if you can take us through that little journey and share about your challenges. Firstly, this is not my baby. This is our baby. Everybody's, whoever, like even yours, because अरबों में से आप यहाँ बैठे हैं और आप लोगों के ज़रिए ये सिनेमा वहाँ पहुँचेगी. तो पहले तो थैंक यू. देखिए, डिफ़िकल्टीज़ हर चीज़ में होती है, हर जगह पर होती है, हर घर में होती है. तो ये तो सिनेमा है और ये हमारा काम है. और हर फिल्म, ऐसी फिल्मों को बनाना, क्योंकि रोमांटिक या सीक्वल्स बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो फिल्में कम, प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं. और जैसे कि रणदीप ने कहा कि उनको कई फिल्मों में कम पैसे मिलते हैं, लेकिन रोल इतना अच्छा होता है कि वो करते हैं ताकि आगे के जनरेशन, अभी वो नहीं देख रहे हैं, वो आगे देख रहे हैं कि उनको याद किया जाए. उसी तरीके से जब मैं भी किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूँ तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है एक्चुअली में वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, क्योंकि बाहर से इतने लोग सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं और उनका वो सब्जेक्ट्स नहीं सपना बन जाता है. और उसी तरीके से ये जो फिल्में मैं इतने सालों से बनाता आया हूँ, चाहे वो सरबजीत हो, अलीगढ़ हो, भूमि हो, मैरी कॉम हो, झुंड हो, अटल हो, सावरकर, अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता था कि बाजीराव वॉज माई टफेस्ट फिल्म टू सेट अप एंड शूट एंड रिलीज. But I would say Savarkar is the toughest film to convince people to do the film. क्योंकि 3 साल तक तो मुझे कोई फंडर मिला ही नहीं, और मैं लास्ट में ही हमेशा आनंद पंडित जी के पास जाता हूँ जब सारे जगह से हार जाता हूँ. और आनंद जी के पास मेरी मीटिंग वो मेरे हिसाब से 5 मिनट की होती है कि सर मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हमें सपोर्ट कर दें. ठीक है संदीप, डन, नो प्रॉब्लम. तो कौन, मतलब इतना आसान होता है वो चीज़. तो आनंद जी, यू हैव बीन अ ग्रेट पिलर इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच रियली. एंड देन फिर उस फिल्म में वो कोई भी फिल्म तभी बन पाती है जब एक वो पर्टिकुलर एक्टर हो. और जब रणदीप मुझे मिल गया ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत, मतलब मैं 100 से सीधा 90% रिलैक्स हो गया फिल्म पे, क्योंकि ही टुक द चार्ज ऑफ, एंड स्लोली ही केम एज एन एक्टर. देन ही started helping in writing, and then he wrote the film, then dialogues, and then what all he has gone through. That is his journey, which he will definitely tell in the process before the 22nd March, hopefully, Randeep, and we should say many this. times over. I'll be telling it many times. And तो ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे लगता है कि भारत को बहुत ज़रूरत है कि सिनेमा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है लोगों को. और ये बात मैं खुद सिनेमा जैसे जब मैंने लगान देखा तो मुझे लगा कि यार फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग लास्ट के 6 पे खड़े हो गए थे गेटी थिएटर के स्टॉल पे. तो मुझे लगा ये असर होता है सिनेमा का, और अंदर ही था. पर मैं कोई जौहर या फिर खान तो हूँ नहीं कि सिनेमा में ईजिली आ जाऊँ.
तो मैंने पहले जर्नलिज्म किया 10 साल, सीखा, समझा, लोगों को समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिफोर कमिंग इनटू सिनेमा। और उसके बाद जब ये समझ में आ गया तब मैंने फिल्में बनाना, फिर संजय भंसाली जी ने मुझे सीईओ रखा और फिर मैं वो जर्नी शुरू किया। लेकिन मेरे हिसाब से फिल्में बहुत आसान हैं, लोग बहुत मुश्किल हैं। तो एक फिल्म पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सही टीम चुनना, और वो टीम जब सही मिलती जाती है तो फिल्म पहुंच जाती है अपने मुकाम पे। थैंक यू। Randeep over here. Randeep. Randeep. Anand sir, what did you like about this particular project when Sandeep came and met you? What was that something that he gave you? And he must have given you a narration. What was something which you said, "Nahi yaar, I have to do this film"? See, uh, being part of Bharatiya Janata Party, I was a treasurer of Bharatiya Janata Party. So always मैंने सावरकर जी को स्टडी किया था. So I always thought कि उनको न्याय नहीं मिला था कभी भी. And when Randeep and Sandeep came, and Randeep का जो conviction देखा था हमने 5 मिनट में, मैंने बोला ठीक है, I'm on. So उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं था. I think next generation को ये एक कहानी like a library छोड़ के जाए, तो that was the intention. Hello, Hello. Randeep here. Randeep over here. Oh yeah. More questions. Yes, one question. See, we have सुना है, देखा है, मतलब सुना देखा ही नहीं, सुना है कि जो काला पानी और द ट्रॉमा व्हाट ही वेंट थ्रू सावरकर, जब आप रियली में उनकी जब किरदार अदा कर रहे थे, तो कहीं आपको ऐसा रुक गए, कहीं आपको ऐसा टूट गए कि ऐसा जब एक्चुअली उनका क्या हुआ होगा? नहीं, मैं जब रेकी पे भी गया था तो मैंने अपने आप को उनकी सेल में बंद करने को बोला क्रू को, और बोला आप तुम जाओ, थोड़ी देर में बुलाता हूँ. मुझसे ज़्यादा देर रहा नहीं गया वहाँ पे, मेरा दम घुटने लगा. पर मैं उनको एक तरफ से क्या क्या गुजरा वो तो ऑब्वियसली इमेजिन करते हो आप एज एन एक्टर, पर मुझे हमेशा एज ए डायरेक्टर अपने आप को उसके ऊपर रखना पड़ा, क्योंकि पूरा तामझाम ही मैं देख रहा था. तो it was tough, but it was unimaginably tough what he went through, and not only him, many other people. And there are other unsung people like his own older brother Baba Rao Savarkar or Ganesh Damodar Savarkar, who also went to Kalapani, who also went through all the struggle, and he's even more unsung than Vinayak Damodar Savarkar. So there are many more people who suffered a lot, but nobody was a prolific writer, poet, and an ideologue like Mr. Vinayak Savarkar was. What differentiates him from other people was not only his struggle, but also his giant intellect and his ability to convince and influence a large amount of people. That's why he's so important today. We're going to take one Randeep last over here. question. Last question, Randeep. please. रणदीप सेंटर में. रणदीप, आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब आजकल सोशल मीडिया के दौर पे जो है लोग जो है फिल्मों को जो है मतलब नेटिजन जो है क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कुछ ना कुछ लेके, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लेके करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है, या फिर उसके बाद जो है पार्टी से जोड़ देंगे पॉलिटिकल उससे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा ये मानना है कि ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो सावरकर जी की लाइफ पे बहुत सालों से लोगों ने मचा रखा है. तो ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये उस प्रोपेगेंडा को क्लियर करने वाली फिल्म है. और ये फिल्म हम एक्चुअली पिछले 15 अगस्त को रिलीज़ करने वाले थे, पर ड्यू टू मैनी रीजंस आउट ऑफ आवर कंट्रोल ये रिलीज़ होते होते 22 मार्च तक आई है. और मैं चाहूँगा कि लोग इसके बारे में डिबेट करें. जितना लोग इस फिल्म को सोशल मीडिया पे नकारेंगे, उतनी ही ये फिल्म लोगों तक पहुँचेगी. ये मेरा अपना मानना है. Hi guys, Naveen this side from E24. First of all, congratulations to you all. Thank you. बचपन में मैंने ये चीज़ पढ़ा था कि भारत की पहली महिला जिन्होंने झंडा को फहराया था वो था मैडम कामा, और उसे बड़े पर्दे पर देखना एक अलग ही ट्रीट था. मेरा सवाल संदीप आपसे भी है और आनंद सर आपसे है कि 2 लैंग्वेजेस में क्यों नहीं भारत के हर कोने में ये कहानी पहुंचनी चाहिए? क्या कोई प्लानिंग है कि आगे अदर लैंग्वेजेस में भी आप इसे रिलीज़ करेंगे?
नहीं, ऐसा आप सिनेमा को लैंग्वेज में क्यों बांध रहे हैं? हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है और हिंदी ही होनी चाहिए। और क्योंकि एक मराठी में भी वो भगूर में रहते थे, देवलाली में, तो जी ने, डायरेक्टर साहब ने और हम सब ने सोचा कि इसको मराठी में भी बनाना चाहिए, तो इसलिए हमने मराठी में भी उसको पेश कर रहे हैं हम। तो आप शायद उसको बांध रहे हैं कि हिंदी में ही क्यों? हिंदी ही मलयालम है, हिंदी ही कन्नड़ है, हिंदी ही तमिल है। हमने उसको बांटा है, भाषा एक ही है भारत का। I'll add to that. सावरकर जी उनको नहीं रही, वो थी कि वो मराठी में बहुत ज़्यादातर उनके लेख मराठी में हैं, उनकी कविताएं, उनके नाटक, उनके विचार सब मराठी में उन्होंने बहुत लिखे थे। इसीलिए करके वो पूरे देश तक वो नहीं पहुंच पाए। जब मैंने भी इनको पढ़ने की कोशिश की तो मराठी में जितना उनके लैंग्वेज में जो एक दम है और एक मज़ा है जिसमें वो लिखते थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे, तो ये उस वजह से वो पूरे देश तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए मैंने इसको हिंदी में चूज़ किया और मराठी इसीलिए क्योंकि वो मराठी थे और मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के गांव-गांव तक ये पिक्चर पहुंचे। और जब मैंने ये पिक्चर मराठी में देखी, पूरी नहीं देखी, जितनी देखी, मुझे ये पिक्चर मराठी में और भी सुंदर लगी। और बाकी लैंग्वेजेस का तो वो खैर जी वाले डिसाइड करेंगे कैसे करना है नहीं करना। मैं तो चाहूँगा कि ये दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाए और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेश में स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी पहुंचनी चाहिए, बिकॉज इट विल शो द वर्ल्ड द हॉरर्स ऑफ colonialism that we went through, which were somewhere missing in Richard Attenborough's take on Gandhi. The hard work that has gone into it, the blood and sweat that has gone into it, is reflecting. It's all over there. Thank you, gentlemen, for. Thank you very much. One last question. It's on. You can Hello. shoot. हेलो रणदीप सर, हाँ जी, बताइए। शिंदे फ्रॉम मुंबई तरुण भारत। आपका माइक ऊपर कर लीजिए। आई डोंट नो, इट्स नॉट। हेलो, ओके। हेलो रणदीप सर, रसिका शिंदे फ्रॉम मुंबई तरुण भारत। अभी आपने कहा कि मराठी में आपने ये मूवी देखा और भी ज़्यादा सुंदर लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे ये पूछना है कि जब भी आप कोई बायोपिक करते हैं तो उनके कैरेक्टर में से कुछ चीज़ें एज अ एक्टर, एज अ इंसान आप अपने पास रखते हो। सावरकर जी के गुण या उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली थी। आपने ऐसे कौन से 3 गुण हैं जो आपके पास एक रणदीप हुडा हमेशा रखना चाहेगा और जो उन्होंने रखा है? उनकी लिखाई, उनकी लिखने की जो एक रुचि थी। मैंने भी ये पिक्चर करते करते मैं भी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखने लगा हूँ। ये पिक्चर तो खैर लिखी थी। दूसरा, उनका देश प्रेम और उनका जो हिंदुत्व का जो आइडिया था कि हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत, धर्म, समाज या जाति के क्यों ना हो। वो मैं पहले भी बिलीव करता था और उनसे उनके लेख पढ़ के और उनके बारे में जान के ये मेरे लिए और भी माननीय हो गया है। और उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ जैसे तिखट, ये सब तो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं। Here's hoping, gentlemen, you achieve what you want to achieve with this film. It's looking beautiful, and the kind of conversation your film has ignited is outstanding. Can we have a little? Oh, thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Can we have the? Yeah. After the photo op, we are going to play the trailer. Once more, everybody loved it. And for all the people who came late, you can enjoy the visual treat that the trailer is.
You have stunned us into silence with a beautiful trailer. So we are going to play the trailer one more time. The beautiful visual treat that it really was. मैंने बोला ठीक है, आई एम ऑन. तो उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं था. आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन को ये एक कहानी लाइक ए लाइब्रेरी छोड़ के जाए, तो दैट वाज द इंटेंशन. Hello, Randeep here. Randeep over here. Oh, yeah. More questions. Yes, one question. See, we have सुना है, देखा है, मतलब सुना देखा ही नहीं, सुना है कि जो काला पानी और द ट्रॉमा व्हाट ही वेंट थ्रू सावरकर, जब आप रियली में उनकी जब किरदार अदा कर रहे थे, तो कहीं आपको ऐसा रुक गए, कहीं आपको ऐसा टूट गए कि ऐसा जब एक्चुअली उनका क्या हुआ होगा? नहीं, मैं जब रेकी पे भी गया था तो मैंने अपने आप को उनकी सेल में बंद करने को बोला क्रू को, और बोला आप तुम जाओ, थोड़ी देर में बुलाता हूँ. मुझसे ज़्यादा देर रहा नहीं गया वहाँ पे, मेरा दम घुटने लगा. पर मैं उनको एक तरफ से क्या क्या गुजरा वो तो ऑब्वियसली इमेजिन करते हो आप एज एन एक्टर, पर मुझे हमेशा एज ए डायरेक्टर अपने आप को उसके ऊपर रखना पड़ा, क्योंकि पूरा तामझाम ही मैं देख रहा था. तो it was tough, but it was unimaginably tough what he went through, and not only him, many other people. And there are other unsung people like his own older brother Baba Rao Savarkar or Ganesh Damodar Savarkar, who also went to Kalapani, who also went through all the struggle, and he's even more unsung than Vinayak Damodar Savarkar. So there are many more people who suffered a lot, but nobody was a prolific writer, poet, and an ideologue like Mr. Vinayak Savarkar was. That what differentiates him from other people was not only his struggle, but also his giant intellect and his ability to convince and influence a large amount of people. That's why he's so important today. We're going to take one last question. Last question, please. रणदीप सेंटर में. रणदीप, आपसे पूछना चाहेंगे कि मतलब आजकल सोशल मीडिया के दौर पे जो है लोग जो है फिल्मों को जो है मतलब नेटिजन जो है क्रिटिसाइज करने लगते हैं कुछ ना कुछ लेके, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लेके करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलेंगे प्रोपेगेंडा फिल्म है, या फिर उसके बाद जो है पार्टी से जोड़ देंगे पॉलिटिकल उससे, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा ये मानना है कि ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो सावरकर जी की लाइफ में बहुत सालों से लोगों ने मचा रखा है. तो ये एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये उस प्रोपेगेंडा को क्लियर करने वाली फिल्म है. और ये फिल्म हम एक्चुअली पिछले 15 अगस्त को रिलीज़ करने वाले थे, पर ड्यू टू मैनी रीजंस आउट ऑफ आवर कंट्रोल ये रिलीज़ होते होते 22 मार्च तक आई है. और मैं चाहूँगा कि लोग इसके बारे में डिबेट करें. जितना लोग इस फिल्म को सोशल मीडिया पे नकारेंगे, उतनी ही ये फिल्म लोगों तक पहुँचेगी. ये मेरा अपना मानना है. Hi guys, Naveen this side from E24. First of all, congratulations to you all. Thank you. बचपन में मैंने ये चीज़ पढ़ा था कि भारत की पहली महिला जिन्होंने झंडा को फहराया था वो था मैडम कामा, और उसे बड़े पर्दे पर देखना एक अलग ही ट्रीट था. मेरा सवाल संदीप आपसे भी है और आनंद सर आपसे है कि 2 लैंग्वेजेस में क्यों नहीं भारत के हर कोने में ये कहानी पहुंचनी चाहिए? क्या कोई प्लानिंग है कि आगे अदर लैंग्वेजेस में भी आप इसे रिलीज़ करेंगे? नहीं, ऐसा आप सिनेमा को लैंग्वेज में क्यों बांध रहे हैं? हिंदी हमारा राष्ट्र भाषा है और हिंदी ही होनी चाहिए. और क्योंकि एक मराठी में भी वो भगूर में रहते थे देवलाली में, तो जी ने, डायरेक्टर साहब ने और हम सब ने सोचा कि इसको मराठी में भी बनाना चाहिए, तो इसलिए हमने मराठी में भी उसको पेश कर रहे हैं हम. तो आप शायद उसको बांध रहे हैं कि हिंदी में ही क्यों? हिंदी ही मलयालम है, हिंदी ही कन्नड़ है, हिंदी ही तमिल है. हमने उसको बांटा है. भाषा एक ही है भारत का. I'll add to that. सावरकर जी उनको नहीं रही वो थी कि वो मराठी में बहुत ज़्यादातर उनके लेख मराठी में हैं, उनकी कविताएं, उनके नाटक, उनके विचार सब मराठी में उन्होंने बहुत लिखे थे. इसीलिए करके वो पूरे देश तक वो नहीं पहुंच पाए. जब मैंने भी इनको पढ़ने की कोशिश की तो
मराठी में जितना उनके लैंग्वेज में जो एक दम है और एक मज़ा है जिसमें वो लिखते थे और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखते थे, तो ये उस वजह से वो पूरे देश तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में चूज़ किया। और मराठी इसीलिए क्योंकि वो मराठी थे और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के गांव-गांव तक ये पिक्चर पहुँचे। और जब मैंने ये पिक्चर मराठी में देखी, पूरी नहीं देखी, जितनी देखी, मुझे ये पिक्चर मराठी में और भी सुंदर लगी। और बाकी लैंग्वेजेस का तो वो खैर जी वाले डिसाइड करेंगे कैसे करना है नहीं करना। मैं तो चाहूँगा कि ये दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाए और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेश में स्वतंत्र वीर सावरकर की कहानी पहुंचनी चाहिए, बिकॉज इट विल शो द वर्ल्ड द हॉरर्स ऑफ colonialism that we went through, which were somewhere missing in Richard Attenborough's take on Gandhi. The hard work that has gone into it, the blood and sweat that has gone into it, is reflecting. It's all over there. Thank you, gentlemen, for. Thank you very much. One last question. It's on. You can Hello. shoot. हेलो रणदीप सर, हाँ जी, बताइए। फ्रॉम मुंबई तरुण भारत। आपका माइक ऊपर कर लीजिए। आई डोंट नो, इट्स नॉट। हेलो, ओके। हेलो रणदीप सर, रसिका शिंदे फ्रॉम मुंबई तरुण भारत। अभी आपने कहा कि मराठी में आपने ये मूवी देखा और भी ज़्यादा सुंदर लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे ये पूछना है कि जब भी आप कोई बायोपिक करते हैं तो उनके कैरेक्टर में से कुछ चीज़ें एज अ एक्टर, एज अ इंसान आप अपने पास रखते हो। सावरकर जी के गुण या उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली थी। आपने ऐसे कौन से 3 गुण हैं जो आपके पास एक रणदीप हुडा हमेशा रखना चाहेगा और जो उन्होंने रखा है? उनकी लिखाई, उनकी लिखने की जो एक रुचि थी। मैंने भी ये पिक्चर करते करते मैं भी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखने लगा हूँ। ये पिक्चर तो खैर लिखी थी। दूसरा, उनका देश प्रेम और उनका जो हिंदुत्व का जो आइडिया था कि हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी प्रांत, धर्म, समाज या जाति के क्यों ना हो। वो मैं पहले भी बिलीव करता था और उनसे उनके लेख पढ़ के और उनके बारे में जान के ये मेरे लिए और भी माननीय हो गया है। और उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ जैसे तिखट, ये सब तो मेरे अंदर ऑलरेडी हैं। Here's hoping, gentlemen, you achieve what you want to achieve with this film. It's looking beautiful, and the kind of conversation your film has ignited is outstanding. Can we have a little? Oh, thank you very much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Can we have the? Yeah. After the photo op, we are going to play the trailer. Once more, everybody loved it. And for all the people who came late, you can enjoy the visual treat that the trailer is. You have stunned us into silence with a beautiful trailer. So we are going to play the trailer one more time. The beautiful visual treat that it really was.